the mic's to you. I would like to ask one question from Sir. Sir, as it is said, movie is an ode to Guru Dutt, Sir Guru Dutt. So you want to say something about that? Yeah, I mean, this movie is an ode to the artist in Guru Dutt. I think he was one of the most sensitive artists of our industry, and he was a great filmmaker whose last film, Kaagaz Ke Phool, which today we call a classic, at that point of time was very heavily criticized. It didn't do well. He never made a film after that. It's an ode to that kind of sensitivity. Okay. And to you, Mr. Dulquer Salmaan, I want to ask, like, as a normal people, if we get some comment on a picture, we feel bad. And being a star, I know you have to be strong, but how you deal with these critics and, like, sometimes, yes. I mean, it does affect you because you put in sincere, honest work, at least I do, into my films, and you genuinely want to do good work, and you genuinely want to prove to the audience that you have put your heart into this character. But there is criticism, but a lot of the times it is constructive. Some are personal, but I feel like those are people with their own sort of agenda or something, whatever it is. But there are days when it's hurtful. There are days when it affects you. But like any of us, we can't dwell on it for too long. We all keep moving forward, and I think the best way to keep them quiet is to just keep working hard, and your movies and new roles that you do will hopefully keep impressing a different set of people, and yeah. Rightly said. Now I'm handing over the mic to you people, but I request only one thing, to please ask question related to the movie only. So yes. तुम पूछते हो और दुलकर सलमान को हमने बहुत देखा है, उस्ताद होटल से देखा है, जो बहुत अच्छी फिल्म थी आपकी। आप इस फिल्म में आ रहे हैं, सीतारमण उनकी बहुत ही अच्छी फिल्म थी जिसमें आपने बहुत अच्छा काम किया है, हमने पसंद किया है, और इसका भी ट्रेलर देख करके सच बोल रहा हूँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने एक वेबसाइट में कहा है कि आपने स्क्रिप्ट जब पढ़ी तभी आपने ये तय कर लिया कि आपने इस फिल्म में काम करना है। ऐसा क्या आपने पढ़ा था और क्या आपको अच्छा लगा था जो आपने ये तय किया? दूसरा, आर बाल्की सर से ये मेरा प्रश्न है कि आपने एक तरह से ऐसा लग रहा है कि एंटी क्रिटिक जो है फिल्म को बनाया है, क्या ये मोटिव है आपकी फिल्म का, या हमारी मास ऑडियंस के लिए इसमें क्या है? कैसे वो आपकी फिल्म को देखने के लिए आए, उसके लिए क्या है, क्या वो पसंद करेगी आपकी? I think जब मैं मुझे एक्टर बनना था, मेरी इच्छा ये थी कि हर फिल्म मेरी डिफरेंट लगे और लाइक जेन्युइनली भी अच्छी कंटेंट या सेलिब्रेट सिनेमा, बिकॉज आई हैव अ जेन्युइन लव फॉर सिनेमा दैट आई फ्रॉम चाइल्डहुड। आई थिंक जब एज अ व्यूअर मुझे हर तरह की सिनेमा पसंद है, हर जॉनर, हर लैंग्वेज, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमेशा आई थिंक दैट्स बीन माई गोल, एवरी फिल्म शुड बी यूनिक और उसमें कुछ है जो मैं देखना पसंद करूँ। तो जब बाल्की सर ने ये नरेट किया मुझे, इवन फॉर मी, उनकी सारी जो फिल्म्स है, डेफिनेटली ही हैज़ अ वेरी वेरीड फिल्मोग्राफी, हर फिल्म डिफरेंट ही होता है, पर इवन फॉर हिम आई फील लाइक ये डिपार्चर था कि इन टर्म्स ऑफ जॉनर ही इज नॉट डन समथिंग लाइक दिस। सो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। हमेशा जब हम ये कहते हैं कि ये फिल्म डिफरेंट होगा या है compared to my previous films, but this genuinely felt like that. And मुझे जब भी filmmaker या actors they just go little off center, एक दूसरी direction में venture करते हैं, मुझे बहुत exciting लगता है, even as a viewer when I watch actors or directors जब वो हमें surprise करते हैं. So I knew instantly कि I want to be a part of this film, क्योंकि it surprised me, and hopefully we at the film or all of us actors, we can surprise you with our performances and being a part of such a film. हाँ, आपका सवाल क्या था? क्या ये कोई एंटी क्रिटिक मूवी है? हाँ, मास के लिए। अच्छा, ये एंटी क्रिटिक फिल्म नहीं है। ये एक ऐसा फिल्म है जो हमारी सोच में क्या गलती है, या क्या सही है, दोनों तरफ से।
इंडस्ट्री की वजह से या मैं आर्टिस्ट हूँ मेरी तरफ से, और क्रिटिक जो आप हैं आपकी तरफ से, क्या गलती है, क्यों झगड़ा होता है, क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, क्यों ऐसा होता है, और क्या हो सकता है अगर ये इसको सॉल्व नहीं किया तो, इसको सेंसिटिविटी नहीं दिखाया आप लोग और हम लोग नहीं समझे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और ये फिल्म है, ये क्रिटिक या एंटी क्रिटिक या प्रो क्रिटिक कुछ नहीं है इस फिल्म में, ये एक थ्रिलर है, एक इट्स अ फन फिल्म, it's got a lot of it's actually a romantic film in a lot of ways, and it's full of fun, full of humor, and even all the even though you're doing a psychopath serial killer film, it's a very different kind of a mood. It is not a scary film. It's not that kind of a film. It's a cool film, and it's for a lot of people who today are आपने उस्ताद होटल देखे हैं तो सब पिक्चर देखते हैं आप लोग। it's that kind of cinema. It's a fun ride in this genre. Second है ये मांस का शब्द आज तक मैं समझा नहीं। हम सब मांस हैं, हम सब वही खाते हैं, हम सब वही देखते हैं, हम सब वही पसंद करते हैं। मांस का मतलब ये नहीं 4 गाना होना चाहिए और 4 फाइट होना चाहिए या हीरो हीरोइन ऐसा करना चाहिए, कुछ वैसा मांस का रूल्स नहीं है। आज सिनेमा का हर रूल तोड़ा जा रहा है, और हमको भी ये नहीं है कि हम आर्ट फिल्म बना रहे हैं या कुछ मीनिंगफुल फिल्म बना रहे हैं, सब फिल्म मीनिंगफुल होना चाहिए, पर एंटरटेनमेंट का मतलब एक चीज़ नहीं हो सकता है। एंटरटेनमेंट होना चाहिए, हर फिल्म में एंटरटेनमेंट होना चाहिए, मज़ा होना चाहिए, पर वो मज़ा अलग अलग तरह की मज़ा हो सकता है। हमने डिफाइन किया है मास फिल्म ऐसा होना चाहिए, या एक्शन होना चाहिए, बड़ा बड़ा सेट्स होना चाहिए, या पीरियड फिल्म होना चाहिए, बड़ा खर्चा होना चाहिए, बहुत VFX होना चाहिए, वैसे कुछ नहीं। सोच भी मास हो सकता है, कभी कभी सिंपल सोच भी मास हो सकता है, और ऐसा ही एक पिक्चर है। आई एम श्योर दैट व्हेन पीपल स्टार्ट सीइंग इट, जब हम क्रिटिक्स का शब्द बोलते हैं या आर्टिस्ट का शब्द बोलते हैं, थोड़ा अनमास लगता है। क्रिटिक और मास कौन समझेगा, बिकॉज हमारे समझ में आज तक वो वर्ड यूज़ नहीं किए मास के लिए। तो वैसा नहीं है, हर दिन हमको कुछ नया करना है, तभी लोग आएंगे पिक्चर देखने के लिए। वही देखने के लिए क्यों आएंगे, तो इसीलिए हमने किया, बट थ्रिलिंग फन फिल्म। Hello. Hi sir, Akash Desai from filmykida.com sir. First of all, congratulations, because this movie became the first Hindi film to be shot at JJ Schools of Art. So sir, I just want to know your experience, individual experience from both of you. How was it like to shoot that film there? So I want to know that experience, individual experience from both of you, of shooting the movie. JJ School of Art to me is this is an iconic structure in Bombay, and no Hindi film has been shot. They've never kind of given it out for shoots. But when we approached them saying it is a film about an artist, and we actually wanted a cop station in JJ School of Art, but it had the architecture of that. This is fabulous people, and the kind of support we got both from the faculty and from the management and the students there, it was amazing. And वहाँ पे एक वो क्या है, किपलिंग का बंगलो होता है, वो हेरिटेज प्रॉपर्टी है, where it's one of the, if all of you go to Bombay, don't go to Chowpatty, don't go to this thing, just go to JJ School of Art. वो वहाँ पे वो किपलिंग बंगलो देखिए, such a beautiful place, preserved really really well. उनका पहला घर where he was born, and we shot there. Actually, we actually shot in that particular house. So it's one of the most unforgettable experiences. Sometimes in a film, when you shoot in the places that you get the locations that you have in your mind while writing it, it's a greatly satisfying journey. Thank you. Hi, Pallavi from Hindustan Times Online. Hi. So this question is for the two of you. The trailer clearly states that some film critics trade stars for kids. Okay, so is that observation coming from personal experience? Have you ever encountered similar kind of arrangement in your respective body of work so far? My films don't have the budgets to give out those kind of things anyway. But this is not that. See, any profession in the world, be it artists, be it the industry, be it acting, be it police, be it politicians, be it critics, be it media, everywhere, there are good people and there are bad people in every profession. And yes, there are a lot of bad things that do happen.
people without ethics and morals exist in every profession that you kind of take. So I think this is one of those things. And if you want to know whether it's true or not, these are anecdotal. This is a story of, it's a story. Of course, there'll be an element of truth somewhere, but have I had any personal experience? I can never tell you that. No, me personally, I mean, these are things I've heard of, but I don't know how much it genuinely affects my performance in a film or how my film does. So I can't really imagine calling somebody and being like, "Hey, I'm sending you some gifts, write some good things about me," because I wouldn't have earned it, you know. And I'm not somebody who wants to project any kind of image that's built or something like that. And more than anything, I think the audience, the viewers, give me very honest feedback, and that's what I kind of work for. Hello. Hi, sir. Hi. Priyanka this side from Celeb Mantra. One thing that I want to know from Balki sir was when we see the logo of the film, there are stars that's blood coming down or something. So for this film, when the film will release and the critics will for sure give the ratings, so will the ratings will matter to you? The stars will matter or not? What would matter if they're honest about the film? If they're honest about the film and they critique it, not critique. You know, when you say they're critiquing, it's about analyzing the film, what's right, what's wrong about it. That would be far more healthier for me. It would be wrong to say, I wouldn't care whether they give stars or not. Of course, it matters. Of course, we're all sensitive people. But am I going to spend sleepless nights over it? No, I'm not going to. But does good reviews and good critics and good opinions of people about anything that we all do matter? Of course it matters. We all hope that people like it. We all hope people write kindly. But I'm not going to be here saying I'm scared. What this thing? That's not the way. You can't be scared in a creative profession. You have to kind of put it out there. And all of us have to be objective about a story that's being told. Like when we tell a story about cops, for example, we show so many corrupt cops. We're not scared that the cops will come and shut down the theatre. No? We can't live like that. Or if we do a film on politicians, we're not scared that politicians are going to get angry and shut ourselves up. And we all kind of champion people who take on the system, saying, "Arey, fantastic, how bold the filmmaking is." But when it comes to us, when we talk about us, we have a problem. Are you scared? Are you scared? We kind of review. Let's talk about ourselves first before attacking the rest of the system. So do you think that after the release of the film, this movie is something that will make the audience stick to the cinema and making comeback for the theatres? I don't know whether this movie or any movie. I think any movie which is interesting will bring audiences back to the theatre. I think audiences are coming to the theatre. It's not like you don't have to bring them back to the theatre. But it's just about not bringing them there and cheating them of an experience. I just hope if more films come out, as many films come out, which actually give the audience a good time. They just want a good time. They just want to be engaged with what they're seeing and be entertained with what they're seeing. They're not going to use, it's not a cerebral intellectual exercise that we're coming to a theatre for. We're just going to come there to enjoy ourselves or feel something. You know, feel sad, feel happy, feel in love, feel something. So as long as that happens, I think any film that does that will have people in the theatre. Thank you. मिस्टर बाल्की, मैं रविंद्र त्रिपाठी जनसत्ता अखबार से मुझे ये आइडिया अपने आप में बहुत फ़नी लगा। हेलो, बहुत फ़नी भी लगा और इंटरेस्टिंग भी लगा। इस कारण से भी इंटरेस्ट लगा कि मेरी भी हत्या हो सकती है फिल्म क्रिटिक के नाते। ये आइडिया अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। बहरहाल मैं इस पर, ये तो फ़नी आइडिया हो गया। ये आइडिया आपको कैसे है? वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल फिल्में बनी हैं, साइको थ्रिलर्स की बनी है, लेकिन ये आइडिया अपने आप में, मतलब मैंने ऐसी कोई फिल्म या सीरीज़ नहीं देखा है, इतने सारे नेटफ्लिक्स पर फिल्में आ रही हैं। ये आइडिया अपने आप में कि क्रिटिक है या जो एस्थेटिशियन है या जो ओपिनियन मेकर है, वह भी किसी सीरियल किलर का, मतलब सीरियल किलर का साइको भी तो समझना होगा क्या है उसका। तो ये सब आइडिया आया कहाँ से आपको, कैसे आपने डेवलप किया इसको? आज तक किसी को पता नहीं है कि कहाँ से आइडिया आता है। वो गिरता है, फिर हम लिखते हैं। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, पर हम सबको फिल्म में नहीं बदलते हैं, क्योंकि यू नो आई ऑलवेज से दैट फिल्म मेकिंग इज़ वेरी लेबोरियस बिजनेस। सो देयरफॉर अगर आइडिया यूनिक हो तो एटलीस्ट इट्स वर्थ स्पेंडिंग द 2 years. But I'll tell you about this idea.
ये आइडिया मेरे को आपने बोला कि आपको सिक्योरिटी चाहिए या कुछ ऐसा, यू नो एवरी आर्टिस्ट को रोज मारा जाता है. I mean, many artists die through words. You know, killing does not mean you need a weapon. You can kill with words. With words you can finish a person. With words you can kind of, you know, completely, end his life or her life. So I've always believed in the sensitivity of this thing. When you can attack me, how do I not attack you? What is my view? अगर मेरे को अपील करना है, इस दिल्ली में सेशंस कोर्ट है, वहाँ फेल हुआ तो हाई कोर्ट जा सकता हूँ, वहाँ फेल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ. आप जो क्रिटिक्स है, अगर आपने बुरा बोला, आपका अकाउंटेबिलिटी क्या है? आपको रिव्यू देने वाला कौन है? आप लिख के जाते हैं और हम मरते हैं, आपको क्रिटिसाइज करने वाला कौन है? कोई नहीं है. सो दैट्स द ब्यूटी. आई ऑलवेज फाउंड दैट फैसिनेटिंग. पर्सनल एक्सपीरियंस से मेरा पहला फिल्म जो मैंने सोचा अच्छा फिल्म बनाया मैंने, पर एक मेरा पहला रिव्यू, उस टाइम में बहुत मशहूर क्रिटिक थे वो, पहला रिव्यू पढ़ा, बहुत बुरी तरह मारा मुझे, और वहाँ से बहुत डिप्रेस हो गया. आज तक वो डिप्रेशन से रिकवर नहीं हुआ मैं, पर वहाँ से आया. पर बहुत 2007 से मैं सोच रहा हूँ कैसे इसको रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट कैसे करूँ. तो मज़ा, इट्स अ फन फिल्म एक्चुअली, जो इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, बट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस स्टफ. बट मेरे को एक बात है, अगर आप मुझे, आपका क्रिटिक कौन है? आप भी काम करते हैं, आई मीन आप मतलब आप नहीं, सब लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं उनका भी एक ड्यूटी होता है, उनका रिव्यू करने वाला कौन है? क्योंकि हमारा लाइफ आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को पावर समझते हैं, ये पावर नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल जॉब है, बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है. इसीलिए मुझे लगा कि ये फिल्म बनाना चाहिए अभी. बाकी से है सर. हाय, दिस इज सौरभ फ्रॉम न्यूज़ नेशन. सर, अब इतने सालों में हम अभी देख रहे थे कि एक्टर्स और डायरेक्टर्स आगे आगे और क्रिटिक्स पीछे पीछे, लेकिन इससे ये पता चला है कि अब डायरेक्टर भी क्रिटिक्स के पीछे पीछे है और एक फिल्म बन रही है. इस फिल्म में कितनी सच्चाई भी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी इंस्टेंस देखे हमने इस फिल्म में, और जब फिल्म आएगी तो कितनी सच्चाई हम देख पाएंगे क्रिटिक्स की, जिस तरीके से बोला गया कि घड़ी दे दी गई, छोटे छोटे अपने पीसेस रखे. दूसरा क्या इससे अभी रिव्यूज पे, क्योंकि फिल्म देखने के बाद कहते हैं कि सोच बदलती है, तो इससे क्या थोड़ी सी रिव्यू के तौर पे की सोच बदलेगी, कि क्योंकि एक फिल्म कितनी सच्चाई देखेगी हमें इस फिल्म में. शुक्र है ये सच नहीं है ये फिल्म. अगर सच होता तो बहुत भयानक सच होता ये कहानी. पर ये क्या है, ये फिल्म इट्स नॉट अबाउट, ये फिल्म रिव्यूज़ के बारे में नहीं है, सिर्फ फिल्म क्रिटिक्स के बारे में नहीं. जो भी हम क्रिटिसाइज करते हैं, अगर हम आज रेस्टोरेंट जाते हैं, हम रेट करते हैं, अगर घर में भी कोई खाना बनाता है, बना के कोई जो भी है हम खाते हैं उसको, अगर क्या बोलते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं बकवास खाना है, क्या है, उन्होंने दो घंटा मेहनत करके बनाया है कोई, हम कैसे बोलते हैं बकवास. क्या होता है जो मेहनत करता है और करती है, जो क्या होता है उनके दिल में. तो वो क्रिटिसिज्म हम करते हैं ना, हम क्या समझते हैं अपने आप को, क्या राइट दिया गया हमको ऐसे बोलने का, किसी का मेहनत का ऐसा उड़ाने का क्या, कौन दिया हमको राइट. वो बात मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा. और इसके बाद कोई इन्फ्लुएंस होगा, बदलाव होगा, पता नहीं, पर बदलाव तो होना चाहिए. नॉट जस्ट अबाउट फिल्म क्रिटिसिज्म और रिव्यूज, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एक एग्जाम्पल है, बस उतना ही. पर जब भी हम रेटिंग देते हैं किसी उबर ड्राइवर को या रेस्टोरेंट को या घर में कुछ बोलते हैं या किसी को भी, अगर हम रेटिंग करते हैं, हम समझते हैं आज सडनली हमको हमारे पास पावर आ गया, क्योंकि सोशल मीडिया है, हमारे पास पावर आ गया. इसको हम थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लिए, क्योंकि उनका लाइफ भी उस पर रेटिंग भी डिपेंड करता है, उसका तनख्वाह या उसका प्रमोशन किस हमारा रेटिंग पे डिपेंड करता है. वो भी हमको सोचना है नेक्स्ट स्टेप, उतना ही. Hi, I'm Arushi from ANI. My question is for Dulquer. You have done the Zoya Factor and Karwana, and now CHUP. What are your plans for doing more projects? Are you open to do more projects in Hindi cinema?
I'm very open to doing projects across languages. Obviously, I've always grown up watching Hindi cinema, love the industry, love cinema here. But I think I want to keep doing unique films, like different roles, because I do work in so many languages. I think every outing should be a little memorable, because I feel like I come a little sporadically. There's always a gap. So whenever I do a film in Hindi, I hope it's memorable to the audience. I hope it's a film that they take back home, and it's a role that they take back home, and I stay in their minds as at least as a good actor. Hello sir, Bhavna from News 18. Hi. So sir, you belong from the Malayalam film industry, and it is one of the film industry that have shown the genre thriller as perfectly over the screen. So what was the one thing that has, what is your view on genre, thriller as a genre? And also, what was the first thing that you saw in the movie that you got on board for this? I've always loved it as a genre, like you said. Anything that gets you involved, where you don't come out of the film. Yeah. I think that's very interesting. I mean, I think every film should be like that across genres. I don't like anything that pulls me out of the film. And even though I listen to so many films across languages, I felt like CHUP stood out from all of them. Because even for all of you watching the film, जो भी trailer के comments or reviews मैंने पढ़ा, like everybody feels this is very unique. Even my friends in Malayalam, even my directors in Malayalam, my writers in Malayalam, they're like, this is such a terrific idea, none of us thought of this. So I think that is what for me was instantly what I loved about the script. But also working with Balki sir for me is a dream come true. It's not something I ever imagined happening. So जब वो call आया था, instantly वो एक excitement था. And I think the script being so interesting was like a double bonus for me. So it's a no-brainer for me to be a part of this film. Any memorable moment from the film shooting that you'd want to mention? I think just shooting in Bombay in the monsoons. I think Balki sir wanted, he was like, guys, please give me dates around this time because I want to shoot in the monsoon. So nothing you see around the rain is really fake in the film. Everything we've shot in actual rain. So that was beautiful for me. It's a very memorable role for me because it's different from things I've done. Also, I don't get to try, sometimes I don't get to try different genres very often. Because when I'm doing Malayalam, it's slightly bigger films for me because that's my primary market. I have to worry about a big opening, big final number and all these things. So I can't sometimes experiment with a big film, I have to experiment with a small film. So that for me was exciting because I got to do this film, which for me is a big film, with Balki sir and experiment doing something unique. Thank you so much everyone. Thank you guys, thank you. Thank you so much sir.